Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. My name is Ashish Bhargav. कैसे हैं आप सब? I hope that you guys are doing well. And before we start, let me know if my voice is audible. Am I visible to each and everyone? Am I audible and visible? Just a second. Okay, so dear friend, this is very important to know the importance of the newspaper because newspaper में आपके जो भी content होते हैं which is very relevant for your exam perspective. And one more thing that is very important, like while you are reading the Hindu or Indian Express, any prominent newspaper, make sure that you need to make a very short notes. That is very important. So in this newspaper analysis that we discuss about all the important highlights and important news that from the all major newspaper that covered in the session. And this session is from Monday to Friday at 11:30 a.m. and majorly we discuss about the Hindu and Indian Express. What exactly we discuss in newspaper analysis? We discuss about national news, international news, economy based news, sports based news, science and tech, personal news, and apart from that we also discuss about Supreme Court ke any verdicts, any amendments, any bills which is in the parliament. This is also we discuss, and this is very important for especially for your CLAT and AILET exam which is likely to come in the month of December. And questions of the day. तो ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, इसे हम 5 क्वेश्चन विल आस्क यू एंड मेक श्योर कि वो 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके न्यूज़पेपर से होते हैं. तो आपको पता होता है कि न्यूज़पेपर में जो कंटेंट आपने रीड की एंड उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होंगे. And quick tips means that with the help of mnemonics, because as you know GA having ocean of facts, so in that context we should know with the help of mnemonics we will learn lots of facts. So stay tuned till the last. And very first news is here is Marxist leader Aruna Kumara Dissanayake is Sri Lanka new president. He 55 years old है, leader of People's Liberation Front, won the presidency with 42.31% of vote in Saturday election. Election का process क्या है? See, in case no candidate pass the mark in the first round, there is a legal provision for a runoff elections between the two frontrunners given how close this year's race has been a runoff, which would be the first ever since this system was introduced 4 decades ago, is very much on the cards. ये जो लीडर है मार्क्सिस्ट लीडर इज अ 55 years old leader of People's Liberation Front and a left-wing coalition claimed victory on Sunday even before the full result for official release. श्रीलंका वर्डिक्ट ये जो है वहाँ की 9th presidential election है, which election is 9th presidential election, and the peoples of Sri Lanka have voted for change in the 9th presidential election with their nod to Anurag Kumara Dissanayake of the National People's Power, even through Mr. Dissanayake, also the chief of Janantha Vimukti Peramuna JVP, had to go through a second round of counting, a first since the introducing of system of executive presidency in 1978. तो ये मार्क्सिस्ट न्यू लीडर अनुराग कुमारा दिसानायके, तो ऑब्वियस श्रीलंका में ऑब्वियस पता है आपको कि इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी. उस इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए यहाँ पे ऑब्वियस देयर इज अ काइंड ऑफ एप्रीहेंशन like Marxist leader that Anurag Kumara is somehow supporting the China's BRI initiative and many more. So that we discuss in the next newspaper analysis unless the outcome will come. Now the next one is FATF, a report on India's and significance of the observation. Very first thing you should to understand, dear friend, कि FATF क्या होता है, which is known to be a financial action task force. This is financial action task force, FATF. FATF basically is a anti-money laundering watchdog. Anti-money laundering watchdog. So a global money laundering and terror financing watchdog, Financial Action Task Force, came out with a mutual evaluation report on India on Thursday. While India gained comfort from being placed in the regular follow-ups category, FATF flagged certain areas improvements, the need of strengthened prosecution of money laundering and terror financing TF. So FATF इंडिया के मेंबरशिप की बात करें तो FATF जो है डियर फ्रेंड is a global money laundering and terrorist financing watchdog. ये जो है एक पेरिस बेस्ड है, पेरिस
बेस्ड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है which was formed in 1989 as a G7 initiative, right? And यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी that इसका मेन काम था that to examine develop measures to combat money laundering, और फिर 2001 में यहाँ पे FATF expanded its mandate to also combat terror financing. So FATF जो है बेसिकली 40 मेंबर बॉडी है and has outfitted a framework of measures to help countries track all illicit financing flows, and these are listed as 40 recommendations that are divided into 7 distinct area, जिसमें आपका AML है, जिसमें CFT पॉलिसीज़ हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉन्सिफिकेशन है, टेरर फाइनेंसिंग है। FATF जो है एक पैरामीटर्स है, अगर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लोन देना होता है उसके लिए। So India became a member in FATF in the year of 2020. That prior to this report, the FATF had undertaken an evaluation that for India in somewhere in June 2010. So India was placed in the regular follow-ups category, but was subsequently removed after a follow-ups report in June 2013. तो पेंडेमिक्स की वजह से FATF का असेसमेंट प्रोसेस था, दैट नेक्स्ट राउंड ऑफ म्यूचुअल इवैल्यूएशन दैट हैड बीन पोस्टपोन्ड इन 2023 and India on-site assessment by FATF happened in November last year, while the assessment came up for the discussion in the plenary discussion in June 2024. म्यूचुअल इवैल्यूएशन की बात करें तो FATF जो है डियर फ्रेंड, ये आपका एक मॉनिटर्स करता है कंट्री को, दैट टू इंश्योर दे implement the FATF standards fully or effectively. So FATF mutual evaluations are in the depth a country report that analyze the implementations and effectiveness of measures that taken against money laundering, terror financing and all. इसका significance क्या है इंडिया की रैंकिंग को लेकर के? सी जो रेगुलर फॉलोअप्स होते हैं, रैंकिंग दैट इज बीइंग सीन एज अ फेवरेट आउटकम बाय न्यू दिल्ली, दैट इज सम डेवलप्ड कंट्रीज हैव रेज्ड ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पे जो G20 कंट्रीज है, जैसे आपका रेगुलर फॉलोअप्स में आप जनरली का बात करें तो UK, फ्रांस, इटली एंड रशिया दैट सस्पेंडेड फ्रॉम FATF इन February 2023, एंड मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज जो है आर इन द एनहांस फॉलोअप्स कैटेगरी में आते हैं, which required submissions of report on annual basis as against once in 3 years in regular follow-up category. तो इंडिया को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, दो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है NPO सेक्टर में जो FATF में है, और इंडिया को, भारत को इंश्योर करना चाहिए राइट कि यहाँ पे जो है द मेजर्स एम्ड एट प्रिवेंटिंग द सेक्टर्स दैट फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड फॉर टेरर फाइनेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटेड, and it also called for major changes to address delays in prosecutions for terror financing cases. Is that clear for everyone? तो बेस जब भी आप इस टाइप के आर्टिकल्स को रीड करें, मेक श्योर उसकी फुल फॉर्म क्या है, उसके बैकग्राउंड कब है, when it was established, when India became member, or what is the main work of FATF. There are 3-4 things what are the important takeaways that is important for your exam perspective. Now we move to the next one, a new white revolution where India stands where it aims to be. यहाँ जो ऑपरेशन फ्लड आपने सुने भी होंगे न्यूज़ में बहुत बारी, दैट इज ऑपरेशन फ्लड। सो ऑपरेशन फ्लड लॉन्च हुआ था, दैट इज समवेयर इन द ईयर ऑफ 1970, दैट शोड इन वाइट रिवोल्यूशन एंड ट्रांजिशंस फ्रॉम द डेयरी सेक्टर के लिए। जो डेयरी सेक्टर होता है, मिल्क सेक्टर की बात करें हम अगर, तो उसके लिए बात हो रही है। So यहाँ पे यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह दैट surrounded plans for the white revolution 2.0. What is the big picture currently in the India's dairy sector and what is the objective of the governance new initiative? The white revolution है आपका white revolution 2.0. So the idea of white revolution 2.0 revolves around cooperative societies which were also the bedrock of Operation Flood 5 decades ago. So dairy cooperative procured करती है around 660 lakh kg of milk per day in 2023 and 2024 में.
So fourth is formulated by a strategy of expanding coverage and deepening the reaches of cooperative. So बात करें यहाँ पे अगर हम मिल्क की, तो एज पर एज मिल्क की प्रोडक्शंस की बात करें तो इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, बट आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, दैट इज यूएसए. सो ऑफिशियल्स के हिसाब से जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है एनडीडीबी, दैट इज रेगुलेटर ऑफ द डेयरी इंडस्ट्री इन इंडिया, दैट डेयरी कोऑपरेटिव्स around 70% of the country district. So there are about 1.7 lakh dairy cooperative societies हैं which cover around 2 lakhs villages. मतलब 30% जितने villages हैं उसका. 20% of the producer are households. The cooperative societies procure about 10% of the country milk production and 16% of marketable surplus. बात करें स्टेट्स में, जहाँ पे स्टेट्स की अगर इसकी प्रोडक्शंस की बात करें तो स्टेट अब जैसे गुजरात हो गया आपका, गुजरात, केरला एंड सिक्किम एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, मोर देन 70% ऑफ विलेज आर कवर्ड डेयरी कोऑपरेटिव्स में, इन सारे स्टेट्स में. जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यूके और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, सो कवरेज है ओनली 10 to 12%, 20% का है. तो यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में क्या है कि यहाँ पे मिल्क की प्रोडक्शन तो है, लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो अराउंड कवरेज करती हैं ओनली 10 to 20% का. एंड द वेस्ट बंगाल, असम हो गया, ओडिशा हो गया, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, हिमाचल, ये स्मॉलर स्टेट हैं of the northeastern that lesser than 10% of the large the area has to be covered. तो यहाँ पे जाने की बात ये है कि जो बल्क of the funding of White Revolution 2.0 that will come through the National Program of Dairy Development and new central sector scheme under the Department of Animal Husbandry and Dairy. ये जो सोर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड टारगेट्स फॉर व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 ने में रिवील किया गया इन चीज़ों के बारे में. सो अंडर द स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू सेट अप विलेज लेवल मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम, दैट चिलिंग फैसिलिटीज एंड ट्रेनिंग द capacity building assistance that will be provided to 1000 multi-purpose primary agriculture credit cooperative society that relate to 40,000 per MPACS. मिल्क सिनारियो की बात करें कि इंडिया इज द वर्ल्ड टॉप मिल्क प्रोड्यूसर विथ हैविंग रीच टू 230.58 मिलियन टन्स जो है प्रोड्यूस करता है इंडिया. एंड 2023 में 1951-52 में दैट कंट्री प्रोड्यूस जस्ट 17 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क. So the average yield, however, around only 8.55 kg per animal per day for exotic cross animals की बात करें तो. So पंजाब में जो है वो ज़्यादा रेशियो है. So as per the basic animal husbandry statistics की बात करें तो the top 5 milk producing states are यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश है. So यहाँ पे almost 31.94% of the total milk producing comes from indigenous buffaloes, followed by 29.81 cross-bred cattle की वजह से. So in that context, we should understand the production of milk scenario in India. That total milk production that has to be increased as per the government data, which clearly says कि जो 18.75 million tons था 2018 और 19 में, that reached to 30 million tons in 2022 and 2023. And India is the world's largest milk producing country in the world. So second largest जो contribution है वो है USA का. USA that became second largest producer of milk in the world. So while total milk production that increased from 187.5, and the milk group comprising milk consumes of sold in liquid form like घी, बटर, लस्सी के फॉर्म में. सो अबाउट यहाँ पे जो गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से यूपी जो है यहाँ पे जो है वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पे टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग में यूपी सबसे टॉप पे है. सेकेंड पोजीशन इज राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन गुजरात एंड आंध्र प्रदेश. सो 2/3 ऑफ द मार्केटेबल मिल्क इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है. इट इज़ द ऑर्गेनाइज सेक्टर टॉप कोऑपरेटिव्स की वजह से, तो कोऑपरेटिव्स को क्रिएट करने की ज़रूरत है. बिकॉज मैंने आपको जस्ट बताया कि 70 गुजरात, केरला और सिक्किम में जो यूटी है पुदुचेरी का 70% जो विलेज होती है वो उसे फॉलो करते हैं कोऑपरेटिव्स को. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन. जस्ट अ सेकेंड.
While we talk about this article, the very first thing we should to understand कि यहाँ पे जो ISRO है उसके बारे में ISRO. So ये क्या है my friend? That is Indian Space Research Organization, in which year it was established? Research Organization established हुआ था 1969 में. Where is the headquarters of ISRO? Is in Bangalore. And यहाँ पे जो उसके चेयरमैन हैं that is S सोमनाथ जी हैं. उन्होंने फ्राइडे को बताया कि स्पेस एजेंसी that will take all precautions by carrying out a sufficient number of tests before the manned Gangayaan mission is launched. So यहाँ पे उनका कंसर्न ये है कि जितने भी 3 missions that go well and we will have the मान मिशन, तो यहाँ पे गंगायान मिशन में क्या क्या चीज़ें चेंजेस की जाएगी उसके बारे में मेंशन किया गया है. So that type of approach is important for us to make sure that mission finally becomes successful. Gangayaan project that envisages demonstrations of human space flight capability of launching a crew of 3 members or an orbit of 400 kilometers, that of 3-day missions, and bringing them back safely to Earth by landing in Indian sea waters. He also spoke about Chandrayaan 4 venue orbital missions, next generational launch vehicles, and building of the first unit of Bharatiya Antariksh Station. High Court fact check unit order. Bombay High Court ने struck down किया center fake news fact check mechanism is what is essentially is to one verdict. What is Justice Chandrukar of SC rule and what happens now? Basically Bombay High Court ने Friday को struck down किया on constitutionally key provision of Embedded Information Technology Rules 2021. क्या था ये? That is Information Technology Rules 2021, which empowered the government to identify fake news on social media platform through a fact check unit, that is FCU. So what is the law in the questions? अप्रैल 2022 में क्या हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे आप माइटी भी कहते हैं, उन्होंने प्रोमोलगेट किया था आईटी के लिए दैट गाइडलाइंस ऑफ डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड दैट अमेंडेड 2023 रूल्स, जिसमें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 आया था. सो यहाँ पे अंडर द रूल्स इफ द FCU कम्स अक्रॉस और इन्फॉर्म्ड अबाउट any post that is fake, false or contain misleading facts that pertaining to business or government, it would be flagged to the social media intermediary concerned. So the online intermediaries that would then have to take down such content if they wanted to retain their safe harbor, that is legal immunity with regard to third party content published by them. So यहाँ पे on what grounds did Justice Chandrukar strike down the rules? कि यहाँ पे उनके ओपिनियन में क्या है जो वर्डिक्ट दिया उन्होंने जस्टिस पटेल का, दैट वहाँ पे रूल 3(1) को अमेंड करने की बात हो रही थी. दैट वाज वायलेटेड आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन और ट्रेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. So he said that impunge rule curtail of fundamental rights of citizen that beyond the reasonable restrictions prescribed under Article 19 Clause 2, which was impermissible through the mode of delegated legislation. और बस यहाँ पे right to freedom of speech and expressions का यहाँ पे एक violation होगा fundamental rights का. So what happened in this matter now? Justice जो चंद्रचूड़ opinion देते हैं इसमें 2021 की जो गाइडलाइंस थी दैट आर ऑल्सो पेंडिंग द बिफोर वेरियस हाई कोर्ट्स अमंग द the key provisions and mandates of social media platform that to set up a grievance redressal and compliance mechanism, which includes appointing a residence grievance officer, chief compliance officer and nodal contact person. अब हम बात करते हैं क्विक टिप्स में. आज है G7 कंट्री को लर्न कैसे करें. एज ए टोल्ड यू, क्विक टिप्स में आज का है टॉपिक जूस विद GF. डज नॉट मेक एनी सेंस, वैसे आप जा सकते हो. नाउ जूस विद GF में G स्टैंड फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली,
C for is here Canada, and E for England, and G for Germany and France. G7, while we talking about G7, it was established in 1975. It is known to be a library group also. And this year Italy hosted this one, G7, that is host country. India was the outreach member of G7. I hope this kind of information is important. सार्क कंट्रीज सॉरी SCO समिट्स की बात हो रही थी अभी, पाकिस्तान इनवाइट किया इंडिया को. इसमें कितने कंट्री हैं उसको लर्न करने के लिए इंडियन ट्रक स्क्वाड इन पाकिस्तान. सो इंडिया, तजिकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड पाकिस्तान, ये सारे कंट्री हैं SCO के. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2001. नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चन ऑफ द डे. Very first question is here. Consider the following statement about the cellular jail in Port Blair. It was built during British rule to house political prisoners. The jail is also known as Kala Pani due to its isolation. It was used primarily during the early 19th century by the British. कितने statement यहाँ पे correct हैं? So dear friend, the only statement B is यहाँ पे one is correct one. Cellular jail was built by the British to house political prisoners, many of whom were अपने इंडिया के freedom fighters थे. And statement second is correct one, as the prison was known as Kala Pani due to its isolation in middle of the sea. Third one incorrect है, because prison was constructed in the late 19th century, not the early 19th century. Which of the following countries is not a member of G7 group? As I told you, Russia 2014 तक it was a part of G7. उस टाइम G8 उसका नाम होता था. So now we can say Russia is not a part of G7. So group of 7 formerly called library group. Group of 6, group of 8 conversion reversion is an intergovernmental organization made of 7 of the world's largest advanced economy. Following countries are the world largest producer of gold, और वो है आपका चाइना. China is the world largest in producing of the gold. China is the world's largest producer of gold, consistently leading global productions in recent year. और जो कंट्री है चाइना, उसने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है इन गोल्ड माइनिंग एंड हैज़ vast reserves that contribute significantly to its production capacity. After the Battle of Buxar 1764, the East India Company appointed residents in Indian states that were ex-governor of British presidency who controlled the state, representatives natives to the princely state who were also part of British Legislative Council, political and commercial agents of company in the states. So that they were political and commercial agents, and their job was to serve the further interests of the company through the residents, and the company officials began interfering. And the last question, Amnesty International के बारे में. Amnesty International एक intergovernmental organization है composed of volunteers who campaign of human rights. तो इसमें से statement is only third one is incorrect. First correct है, second is also correct. Amnesty International is a non-governmental organization and operates independently, not under the United Nations. So dear friend, this is all about the session, and I hope that you enjoyed the session a lot. If you have any questions regarding this, please let us know in the comment section. And please share this beautiful session to your friends and family. They must aware about what is happening around us. And any questions, any suggestion, please let me know, और प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा. अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and do not forget to press the bell icon. So dear friend, we'll meet you in the next session. Till then, bye bye and take care. अपना ख्याल रखें. Till then, bye bye and take care once again.